ओके, अपना जरा ये कर लो, कैमरा ऑन। मेरी आवाज आ रही है? आई होप हम ये इसका पूरा करें आज, वैसे हो जाएगा। कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। कैमरा ऑन सभी, अटेंडेंस है भाई। So let me continue where I left. It was this. Okay. So where were we? तो मैंने माना था, मुझे प्रूव करना था that extreme points of px जो है it is subset of extreme, the collection of extreme points of the unit ball of mx, the all complex measures. तो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने फिर कहा suppose I write a mu belonging to epsilon px as a midpoint of the sets inside bmx, यानी mu is equal to 1 by 2 to that v1 plus v2, where v1, v2 are the measures whose total variation is less than or equal to 1, but they are complex valued possibly. तो उससे मुझे मिला कि I must have, तो मुझे मिला था 1 is equal to 1 by 1 is equal to mu of x is equal to 1 by 2 v1 of x plus v2 of x, and where जो हमने पहले किया था, क्योंकि इसका नॉर्म 1 होना चाहिए v1 of v2 का, where this v1 of x, because it is less than equal to the total variation, so this is less than equal to 1, and v2x जो है that is less than equal to 1. तो मैंने कहा था ये तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि now this is an equation in complex numbers. So 1 जो है वो extreme point है of the unit disk. It implies that v1 of x must be equal to 1, which must be equal to v2 of x. So I have got now, it implies that, तो हमें पता है इनकी जो total variation है ना, so it means that v1 of x जो है वो बराबर है norm of v1k, which is the total variation of 1 over x. So मैंने क्या किया, ठीक है, and v2 of x जो है वो है norm of v2, that's equal to total variation of x. क्योंकि ये 1 है, ये हमने प्रूव कर दिया, ये 1 है, ये भी मतलब चूंकि हमने प्रूव किया ये 1 है और ये 1 है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. So hence I can claim that, hence अब चूंकि ये जो है ये नॉन नेगेटिव है, total variation is non-negative, so this is greater than equal to 0. So it implies that v1 of a and v2 of a, v1a is greater than equal to 0, v2a is greater than equal to 0 for all measurable sets. Measurable sets under this measure v1 and v2. और ये तुम प्रूव कर सकते हो कि अगर टोटल वेरिएशन जो है ये जो है ऑफ द होल स्पेस अगर किसी मेजर का नॉन नेगेटिव आता है तो देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल measurable sets, because what? Because I can write x as a union A complement for a measurable set A. और अगर ये 1 है तो ये भी मतलब ये भी नॉन नेगेटिव, मतलब ये नहीं हो सकते कि मतलब ये भी, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, म्यू ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए, और हमने तो 1 किया था, चलो 1 लिखते हैं, 1 के लिए ज्यादा इजी है दिखा. अगर ये 1 के बराबर है, now this is equal to mu of a complement by the properties of the measure. So it implies that suppose now mu of a जो है
it is a complex number minus non-negative real number. यानी अगर ये real number है भी तो negative real number है. So it would imply that mu of a complement जो होगा ना, it would also belong to C minus non-negative real numbers, because it would be, because mu of a complement जो होगा वो होगा 1 minus mu of a. अब जाहिर सी बात है, this is a complex number which is not a positive number, right? So what? So this also would be a complex number, that is not a positive real number, because otherwise suppose ये positive real number है. अगर ये positive real number है तो then ये भी positive real number ही होना चाहिए. Why? Because it is less than 1. मेरी बात समझ में? अगर ये positive real number होगा तो इसको आपस में replace करो. 1 minus a positive real number that is less than 1 would be a positive real number. So तो इसका मतलब अगर ये complex number है जो positive नहीं है तो ये भी ऐसा ही होगा. But then that would be a contradiction, because you would have 1 mu of a complement plus I've got sum of 2 complex numbers, that's 1. तो वो तभी हो सकता है जब उनका real part एक दूसरे का negative हो, है ना? यानी नहीं, मतलब उसका difference, यानी ऐसे लिख सकता हूँ. Now real part of a complement जो होगा वो होगा negative. Real part of mu of a complement, mu of a भी negative है, which implies that real part of mu a plus mu a complement is negative. That's not possible, because this is precisely real part of 1. That's 1. So 1 is less than 0, which is a contradiction. So कहने का मतलब, it implies that mu1 is non-negative, mu2 is non-negative, and of course ये measure है, ये complex value नहीं है, and norm of v1 is equal to norm of v2 is equal to 1, which implies that mu1 mu2 are probability measures. ये probability measure की यही definition है. So that is, I have been able to write, जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो अगर ये BMX में होते तो ये definitely probability measure होने चाहिए, but हमने माना है mu is an extreme point of these probability measures. It would imply that v1 is equal to v2 is equal to mu, which would imply that mu is an extreme point of the unit ball BMX. तो so far हमने क्या किया है अभी तक हमने दिखाया del x जो है these measures, this is contained in epsilon p of x probability measures, and alpha del x with alpha belonging to k mod of alpha equal to 1 is a subset of epsilon measures of the unit ball, extreme points of the unit ball. Epsilon, yeah, it's extreme points. And I have shown that epsilon px जो है, it's a subset of epsilon bmx. तो ये 3 चीजें मैं प्रूव कर चुका हूँ. So if I show everything is done, है ना? Now if we show that this is contained in alpha del x, मतलब अगर मैं ये अब दिखा दूं, this is a subset of, मतलब ये वाला subset वाली idea, so that alpha is complex number with modulus 1 and x belongs to x is any member of x. यहाँ मैं लिखूं भूल गया. अगर मैंने ये दिखा दिया तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा, अगर ये इसमें है और ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव मेजर्स है तो यहाँ पे अल्फा 1 होना चाहिए. अगर मैंने इतना दिखा दिया तो ये वाला भी प्रूफ खुद ब खुद हो गया, राइट? बिकॉज देन इट हैज नो चॉइस. अल्फा के लिए एक ही चॉइस है, वो 1 है, क्योंकि एक ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है, दैट इज 1 इटसेल्फ, राइट?
Okay, so now to prove the theorem, ये हमारा मेन काम अब है. पहला थोड़ा ऐसे हम खेल रहे थे. Now prove the theorem. It is sufficient to show that epsilon b, epsilon मैं क्यों कहता हूँ, extreme collection of extreme points of the unit ball BMX is a subset of alpha del x such that alpha belongs to K. The field modulus of alpha is equal to 1 and x belongs to x. ये अगर मैंने कर दिया तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया. ओके, अब इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. So let's do it. तो यहाँ पे एक चीज पिक करते हैं. Let mu belong to mu be an extreme point of the unit ball BMX, and let K be the support of mu. Support का मतलब होता है closure of the set over which the function does not vanish. यानी मतलब ऐसे पॉइंट्स का सेट हमने लिया, फिर हमने उसके सारे लिमिट पॉइंट्स भी ऐड कर दिए जहां पे म्यू जो है वो 0 नहीं है. ठीक है, राइट. K be the support of mu. We show that K is a singleton, यानी उसमें एक ही एलिमेंट हो सकता है. Now fix x naught belonging to K, which is the support of mu, यानी जहां पे जो ये हमारा मेजर है ये वैनिश नहीं होता और ये एक्सट्रीम पॉइंट है. एंड लेट इसमें कोई दूसरा पॉइंट हो. नाउ सपोज I've got another element x belonging to K such that x is not equal to x naught. Now let u and v be open subsets of x such that x belongs to u and x naught belongs to u. चलो x naught u में रखते हैं, x v में रखते हैं, with u closure intersection v closure equal to phi. Actually, now you have to remember that x is a compact Hausdorff space which implies that x is normal. और normal space में हम ऐसा कर सकते हैं. Actually ये हम open sets ले सकते हैं, मतलब अगर खाली Hausdorff space हो तो ये closure नहीं होगा, लेकिन अगर ये normal है तो we can do that, and I want you to find it out from some topology book. थोड़ा रिवीजन होगा और knowledge पक्की होगी इस चीज की. Okay, so I've got now x is a normal space. Now since x is a compact Hausdorff and hence normal space, and of course I've got u closure and v closure are, मैं ऐसे कह रहा हूँ, disjoint, चलो लिख देते हैं, and u closure and v closure are disjoint closed subsets of x. Therefore by Urysohn's lemma, there exists a continuous function. There exists a continuous function which means f belongs to cx on x such that its range, यानी fx जो है, it lies between 0 and 1, and of course it sends the whole of set
when f of u closure is equal to 1 and f of v closure. Look, this is the u raised on this one. Now consider the measure. Consider the measure f mu. हमने mu लिया था extreme point of the unit ball. F mu and 1 minus f times mu. Basically, by this I mean f of x into mu, which is a scalar number, whatever, because a scalar multiple of measure is again a measure. And 1 minus fx, of course. Of course, they are non-negative scalars, basically, because fx lies between 0 and 1. So they are positive multiples of, they are non-negative multiples of a measure mu. So therefore, because measures form vector space, they are also measures. Okay. Put alpha equal to norm of this measure, f mu. यहाँ पे थोड़ा सा हमें करना होगा. It means it is the total variation of this measure. That is the definition of the norm. But then you can write it as integral over whole of x d f d mu. But this is by definition actually. Integral over x f modulus of f d ऐसे. लेकिन f चूंकि नॉन नेगेटिव है तो मैं मॉड हटा सकता हूँ. Right? Right. So once I did this, अब चूंकि okay, f जो है, how do I write it as alpha is like this. This is less than equal to, because f is less than equal to 1, so I can write it as d sub mu over x, which is nothing but total variation of x, that's equal to measure of mu. So I have chosen alpha to be this thing, which is basically measure of mu, and this is equal to 1. Why? Because mu is the extreme point of an open ball, right? Because mu is an extreme point. For extreme points, मैंने कहा था home assignment, they lie on the boundary, यानी उनका norm तो 1 होगा of p mx. Okay, तो हमें मिलेगा अल्फा को, अब मैंने लिया है, अगर मैंने इसके बराबर लिया है तो अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1. कहीं पे है ना लेस देन इक्वल टू इधर. ओके, ये लेस देन इक्वल टू 1 है. ओके, अब दूसरा है ऑल्सो अल्फा, अब क्योंकि बराबर है इंटीग्रल ओवर x f d mu के, this is greater than equal to, because it is greater than equal to 0, तो therefore ये तो गड़बड़ है. तो अल्फा जो है, लेट मी चेक, तो अल्फा इसके बराबर है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, बट अल्फा इज आल्सो इक्वल टू दिस थिंग अल्फा डी म्यू, which is greater than equal to, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, I can break the set here. Oh yes, over, it is actually greater than equal to, हाँ पहले इसको ऐसे लिखते हैं, it is greater than equal to, वैसे मुझे इसको equal to नहीं लिख सकता हूँ मैं, हाँ ठीक है, इसको equal to लिख सकते हैं हम. इसको मैं लिख सकता हूँ equal to u closure intersection v closure f d mu, because mu now vanishes over mu vanishes over outside u closure and v closure. Measure ही 0 है outside this set, क्योंकि of course I should write it like this. How should I write it here?
I can write it like this. Because f on this set is 1. अरे कैसे करें इसको? तो मुझे पहले जरा चेक करना चाहिए मैंने क्या किया था. So f of u closure is equal to 1. f of v closure जो है वो है 0. और of course measure of u closure intersection v closure complement, क्योंकि k इसका सपोर्ट है और सपोर्ट में हमने दूसरा पॉइंट लिया. तो इसमें अगर इसका सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है? म्यू का सपोर्ट अगर ये इसी में है, क्या के पूरे का पूरा इसी में है? तो अगर हम इसमें एक दूसरा एलिमेंट लेंगे, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ये पूरे का पूरा सपोर्ट इसमें है? यानी क्या मेजर ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट 0 होगा? वो जानने की बात है, क्योंकि k is contained in, तो यहाँ यूनियन होना चाहिए. कहने का मतलब ये है, let me check this. K is contained in U closure. No, it intersects it. So it intersects the support. U closure जो है और V closure जो है, ये दोनों इसके सपोर्ट को इंटरसेक्ट करते हैं. यानी इसमें कोई है जहां पे वैनिश नहीं करता. So does that mean, यार ये तो देखना है. हाँ ठीक है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव मेजर है तो वी कैन डू दैट, दैट्स फाइन. मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये इसका सबसेट है, नो इशू. बट नाउ वी कैन राइट इट एज इंटर, क्योंकि ये आपस में डिसजॉइंट है. यू क्लोजर एफ डी म्यू प्लस वी क्लोजर एफ डी. यहाँ ये नॉन नेगेटिव मुझे ध्यान नहीं आया बिकॉज इट इज द टोटल वेरिएशन नॉट द मेजर म्यू. अब चूंकि नॉन नेगेटिव मेजर है तो ये शुड बी लाइक दिस. वैसे हम वैसे भी लिख सकते थे. चलो मुझे अब ख्याल आया, मैं वैसे लिखूं, यानी ऐसे में लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू, बजाय ये हमने इसको एक्चुअली लिखा था डी एफ म्यू so over x, right, because it was the measure. So this is greater than equal to, ऐसे में लिख सकता. फिर यहाँ मैं इसको अलग कर सकता था, एफ डी म्यू which is equal to, चूंकि नॉन नेगेटिव है तो एफ डी म्यू, ये हटा दो, इसको ऐसे लिखो, ज्यादा क्लियर ऐसे. अब हमें पता है इस पे ये 0 है और एक पे 1 है. सो u, तो इट वुड बी जस्ट इक्वल टू द variational measure on u closure, right, which would be positive since u is a non-empty open set. तो इसका मेजर जो है वो 0 नहीं हो सकता, कोई भी positive measure including this variation measure. So I have got now alpha is positive, strictly positive. So now the next thing is to take that 1 minus alpha. Okay, ना लंबा चौड़ा है, ये छोटा सा है, बट मतलब एक्चुअली हमारे हिसाब से छोटा है क्योंकि अभी हमने बनार्क स्टोन को टच भी नहीं किया. सो हम यहाँ तक पहुंचे थे. सिमिलरली तो अल्फा इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंड 1 माइनस अल्फा जो है, it can be written as 1 minus integral by our, जो हमने किया था, but that is greater than equal to, I can write mu of x, so total variation of x is equal to, total variation of x is equal to
1, right? Because mu is an extreme point, तो यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए, I think, right? यहाँ पे बराबर होना चाहिए minus ft mu, but this can be written as integral 1 minus f d mu bar x, which can be written as, of course, मैं यहाँ फिर से दोहराऊंगा नहीं, ये मैं इससे पहले कर चुका हूँ. This is nothing but the measure of 1 minus f into mu. Okay, so once I'm done that, so that furthermore अब मैं इसको वही चालाकी करूँगा जो इससे पहले है. 1 minus alpha would be greater than equal to integral v over 1 minus f d mu. वो जो पहली वाली ऊपर जो हमने किया था ये, right, which would be equal to, because this would vanish inside u, क्योंकि f जो है वो u पे 1 है और चूंकि v पे 0 है तब ये 1 होगा, यानी it would be just the mu 1v, which is positive. Now v closure होना चाहिए because v is a non-empty open set. Oh yes, and mu is a borrowed measure. Okay, complex valued borrowed measure. Okay, so far what do we have? It means that, hence I can say alpha lies strictly between 0 and 1, but also it also means that f mu by alpha and 1 minus f into mu divided by 1 minus alpha. डरने की जरूरत नहीं, these are scalar multiples of mu, they belong to Pmx, and तुम easily check कर सकते हो इनका norm is less than equal to 1. How? यहाँ पे ये ठीक है ना, so यहाँ पे कहीं पे less than equal to नहीं था, तो इसका norm 1 है और ठीक है, और यहाँ से मुझे मिलेगा दूसरा वाला, कहाँ से मिलेगा, जो इससे पहले किया था हमने पिछले पेज पे, यानी ये अल्फा ये जो है this is less than equal to 1, so it belongs to mx, और वो भी less than equal to 1 है, तो दोनों belong करते हैं, इनका norm less than equal to 1 है, जो ऊपर तुम चेक कर सकते हो. So अगर ये इसमें है, and mu can be written as, तुम आराम से चेक कर सकते हो, alpha times f mu by alpha plus 1 minus alpha into 1 minus f, मतलब it's simple, इसके बराबर है ये ऑब्वियसली. और मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे म्यू है, तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ 2 को. अब ये मेजर से जो यहाँ बिलोंग करते हैं, राइट, और म्यू हैज बीन रिटन एज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेजर्स इनसाइड BMX. बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, या सिंस म्यू इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, ये तो हो ही नहीं सकता अनलेस इनमें से कोई इसके बराबर हो. एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसका मतलब ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज. तो which is an extreme point, and since mu is an extreme point of BMX, हमें एक contradiction मिलेगा unless, and चूंकि अल्फा 0 नहीं है, अगर अल्फा 0 नहीं है तो obviously ये इसके बराबर होना चाहिए, otherwise there is no way out. And you should have mu equal to f mu, तभी जाके ये सॉर्ट आउट हो, f mu divided by alpha, which means that, what does that mean? हमारा टाइम खत्म होने वाला, लेकिन हम पहुंच गए. which means that basically f जो है अब दो मेजर्स का बराबर होंगे, दिस इज अ मेजर, दिस इज अ मेजर, तो ऑब्वियसली जब मेजर्स की इक्वालिटी हम लेते हैं इन दिस mx, it implies that m is equal to f mu by alpha almost everywhere with respect to measure mu, right?
नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ही कर देना, राइट, almost everywhere, which means that f is equal to alpha, or which is less than 1 almost everywhere. यानी जहां पे ये 1 या 1 से बड़ा है उस सेट का मेजर 0 होना चाहिए, because alpha is strictly less than 1. But that's a contradiction. But that is a contradiction क्योंकि हमें पता है कि f is identically 1 on u and the total variation mu of u जो है वो पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी लेस देन 1 ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सो हेंस जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन ये हमें मिला था, this would be a contradiction. Hence k must be a singleton, some x naught, and since the only measures जिनका एक ही point support हो, only measures would be of the type where support can be a singleton, only measures where support can be a singleton set say x naught have to be of the form, that's obvious, have to be of the form alpha del x naught, where alpha belongs to f. So and चूंकि हमें पता ही है अल्फा इज, अल्फा बिलोंग्स टू एफ नहीं, वो एफ लिखता है ना, तो ये बुक वाला, तो हम के लेते हैं फील्ड को, ठीक है. सो वी गेट mu is equal to alpha x naught, alpha del x naught, with modulus of alpha equal to 1, right. कुछ रह गया इसमें, पीछे जाना चाहिए, हाँ, ओके. कहीं पे लिखा था मैंने कुछ जो मैं बताना चाहता हूँ. ये कहाँ है, मैंने बीच में एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया. ओके, सो दैट्स एंड QED थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रूफ था, यानी mu then belongs to this type alpha del x, right. हाँ, क्योंकि mu का मेजर 1 less than equal to 1 है, that's why alpha has to be equal to 1. एक्चुअली mu का जो मेजर है वो 1 है, because it's an extreme point of bmx. तो अगर इसको स्केलर मल्टीपल हम देंगे तो उसका मॉडुलस भी 1 होना चाहिए, so that this is satisfied. Okay, done. For some where x naught, ये मैं क्या कह रहा हूँ, यानी mu belongs to this set such that alpha belongs to k, modulus of alpha is equal to 1, and x belongs to x, and we are done. तो ये था एक थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरम जिसने हमारा काफी टाइम लिया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट यू जस्ट हैव टू, तुम इसको जब करोगे एक दो बार. वैसे कोई सो रहा है, मतलब सभी सो रहे हैं कि कोई जागा भी है? yes, जाग रहे हो तुम? अच्छा, इसको फिर से पढ़ना तुम कॉन्वे से और किसी बुक से, मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं अपने बानाक-स्टोन थ्योरम में, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं. So any questions regarding anything? अच्छा, कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने आज 22 में से कितने एक्चुअली प्रेजेंट है. ओके, 22 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है, 10 11 11 ही है, यानी आधे सो रहे थे, आधों ने ऐसे ही छोड़ा है. आधों ने ऐसे ही छोड़ा है क्या? सो आज प्रेजेंट अब इतने ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14, 14। तो 14 आज प्रेजेंट है। तो उमर तुम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 14 आर प्रेजेंट। ओके। सर मैं भी यहाँ पे ही हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है वीडियो ऑन करने से। चलो 15 हो गए, फिर 16 हो गया। ओके। तो वैसे जो है कल तुमको मुझे कोई मैसेज आया था, क्या वो सच है? तुम्हें भी आया था?